Okay, hi everyone. Very good evening and welcome back to CrackGradeB. So today we have to take few topics of accounting, right? So somewhere I'll be using the notes and somewhere I'll be using the explanation along with the certain questions which I feel that they are important to what you can say just explain you the concept which I'm trying to do, right? So this will be our approach for today. We are going to start with buyback. In buyback, first thing first, we will be seeing certain conditions which are important, right? And then we'll jump on to the question which I think is needed to do. See, there can be multiple type of questions even in the buyback, but yeah, the what you can say complexity of the question might differ. तो उसके लिए हम पहले provisions पढ़ लेंगे and then we'll do the question. Then we will take the ESOP topic as well. ESOP पे हम कुछ questions देखेंगे जो कि important होंगे in order to explain the topic, right? And similarly, whatever I feel like these are the concepts which are important in between, if I feel like that this is something which I need to explain, so we'll be doing that. So let us start with the buyback of shares. Buyback of shares, why it is done. See, whenever you're a company, right, and you have accumulated cash with you, right, and you feel like that now you want to reduce the number of shareholders those are with you, so you can go for the buyback of shares. ठीक है, आप buyback of shares के लिए जा सकते हैं. That is the thing. Now why do people go for the buyback? So to improve the EPS. So one thing you also have to remember, sometimes what is the impact of certain transactions. ठीक है, कुछ transactions का impact क्या होगा? For example, अगर हम यहाँ पे buyback कर रहे हैं, so buyback का EPS पे क्या impact पड़ेगा? And I hope that you know the formula of EPS. EPS is earnings available to equity shareholders divided by the number of shares which are outstanding. And when we calculate earnings available for equity shareholders after profit after tax, we deduct the dividend which is payable to the preference shareholders. वो हटाने के बाद में whatever is left is the earning available to equity shareholder, right? And I hope that you understand the difference कि अगर मान लीजिए in my company there is an earning of 10 rupees per share, I am not going to distribute the whole 10 rupees to shareholders. ठीक है, सारा का सारा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, because whatever in a company we earn, we do not distribute it all together. हम कुछ portion अपने पास रख लेते हैं and then there is a certain portion of it which we give to equity shareholders in form of dividend. So earning per share and dividend per share, they are the two different concepts. तो पहली बात तो ये कि be it right shares, be it bonus shares, be it buyback, right? You have to understand that what will be the impact of all these three things on different levels of income और let's say EPS वगैरह पे क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि reasons of buyback में it will improve the earning per share. How it is going to improve the earning per share? Because the denominator is going to decrease. Number of shares which are outstanding वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, right? So that is how idle cash आप use करने के लिए to give the confidence to shareholder, to increase promoter shareholdings, etc., etc. These are the things that we understand that for all these purposes the buyback is done. ठीक है, legal provisions में few things. So how you can do the buyback? From free reserves, from security premium account, right? Or from the proceeds of issue of any shares or other specified security, but should not be of the same kind. ठीक है, same तरीके के नहीं होने चाहिए the securities which you are going to buy back, right? सेम वही सिक्योरिटी से आप वही सिक्योरिटी आप इशू नहीं कर सकते हैं उसको फंड करने के लिए भी. सो दैट इज द व्हाट यू कैन से नेगेटिव पॉइंट दैट यू हैव टू टेक इन. अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा इफ आई एम नॉट इशूइंग, चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मैं बाद में जब क्वेश्चन कराऊंगी आपको तब मैं उसी के साथ में पूछ लूंगी, अदरवाइज इट विल नॉट मेक सेंस राइट नाउ. सो बायबैक कैन बी मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स, ठीक है, फ्रॉम ओपन मार्केट एंड फ्रॉम एम्प्लॉइज एज वेल. ठीक है, कहीं से जो भी आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, whosoever is holding your equity shares, you can do the buyback from those people. ठीक है, आप किसी से भी buyback कर सकते हैं, open market से भी कर सकते हैं. There is no limitation on to that particular part. Now, if I talk about what are the conditions of buyback, few things that you have to remember is buyback के लिए you need to pass a special resolution.
But if buyback is only up to 10%, then a resolution at the board meeting needs to be passed. अगर सिर्फ 10% तक का ही है तब आप board meeting का resolution pass कर सकते हैं. Next thing is solvency declaration must be signed by 2 directors. Maximum number of shares which can be bought back in a financial year, 25% of your paid up share capital. Maximum amount of shares. So this is related to quantity. This is related to the amount, that is 25% of paid up and the free reserves. Both these things included. Post buyback. Buyback करने के बाद में आपका debt equity ratio, it should not exceed 2:1. So these are the few things that you have to remember. ठीक है. अब एक चीज है जो हम यहाँ पे करेंगे, CRR में आपको कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहिए. So that thing you have to see. Amount equal to the nominal value of shares needs to be transferred to the capital redemption reserve account. इस पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे. See, there are certain restrictions on buyback of securities in certain circumstances. Let us see that. क्या आपके ऊपर restrictions हैं? So a company should not buy back its securities directly or indirectly through any subsidiary, through investment or group of investment companies, right? If the company has defaulted in the payment of deposit, interest, etc., redemption of debentures, if the company has defaulted in filing the annual return, ठीक है. So आपको indirectly मना किया जा रहा है बायबैक करने के लिए, number 1. And number 2 is if you have defaulted in the payment of interest, or let's say when you were supposed to pay to your debenture holders and preference shareholders and you did not do that, so in that particular case you will not be allowed to do the buyback of shares, right? Now we will be seeing one particular question, and along with this particular question I will tell you कि क्या क्या varieties हो सकती हैं buyback में. So let us see that. See, during the year 2018-19, T Limited buyback 20,000 equity shares of 100 each at a premium of 5%. Okay. During the year 2018-19, the company did not have sufficient cash resources to buy back equity shares and it issued 1,12% preference shares at a premium of 15%. ठीक है. 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स आपने इशू किए एट अ प्रीमियम ऑफ 15%. You were supposed to do the buyback of this much at a premium of 5%. Company has sufficient balance in general reserve. Now at the time of buyback, the amount that needs to be transferred to CRR will be, कितना amount हमको CRR में transfer करना होगा? Please do calculate it. What is the amount I need to transfer to the CRR in this particular case? Answers? बाकी लोग नहीं आंसर देंगे क्या? See this. This is the answer. ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है? Equity share capital that needs to be bought back is 20 lakh rupees. Great. Fine. Buyback premium 1 lakh rupees आपको देना है, 5% लिखा हुआ था. Now how much you have done out of the proceeds of fresh issue preference shares will be 10 lakhs. ठीक है. यहाँ पे I guess there was a problem in the question. It should not be rupee sign. ठीक है. ये रुपी का साइन नहीं होना चाहिए. ओके. So out of proceeds of, अगर see if you have issued the fresh capital, so that much amount you don't have to transfer it to CRR. ठीक है. आपको CRR में वो transfer नहीं करना पड़ेगा. And you all on these issue of preference shares you have got the security premium reserve as well. ठीक है. So security premium reserve जो आपको इस पे मिला है, that also you are utilizing like this.
10 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 15%, 1,50,000 आपने 1 लाख यहाँ के लिए यूज कर लिया to just give the premium which you have to give on buyback, and remaining 50,000 you have utilized over here. So remaining you will be utilizing out of P&L, बाकी का आप P&L से निकालेंगे, right? Why I can't take the whole 10 lakh rupees out of P&L? मैं P&L से पूरा 10 लाख रुपीस क्यों नहीं ले सकती हूँ? Why I have done like this? Like you have given the answer, मैं पूरा का पूरा 10 लाख P&L से क्यों नहीं ले सकती? Why I cannot transfer to the capital redemption reserve the whole 10 lakh rupees? See, there is something called as priority, right? So we know that security premium reserve has got limited usage, right? There are limited number of purpose for which security premium reserve can be utilized. तो अगर ऐसा कोई काम है तो पहले उसको यूज कर लो, क्योंकि आप बाद में यूज नहीं कर सकते. सी इफ देयर इज एनीथिंग विच इज लाइंग इन माय P&L अकाउंट, ठीक है, अगर मेरे P&L अकाउंट में कोई भी बैलेंस है मैं उसको बाद में भी यूज कर सकती हूँ, किसी भी काम के लिए यूज कर सकती हूँ, राइट? बट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है उसके लिमिटेड यूजेस हैं, ठीक है, आप बहुत ही कम चीजों में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हो. सो बेसिकली आप पहले उसको यूज करो इफ देयर इज एनी बैलेंस इनटू इट, एंड दिस विल बी एप्लीकेबल इन एनी क्वेश्चन ऑफ बायबैक, राइट? If there is any balance in the security premium, you have to utilize it first, and उसके बाद में you will be taking out funds from the P&L or general reserve, ठीक है? So that is something that you have to understand. पहली चीज ये. अब दूसरी चीज ये, for example, if I am telling you कि डेट इक्विटी के बारे में बात कर लेते हैं. So you have been told, हाँ, 10 lakhs is technically correct. This is just that from where you are taking out funds, ठीक है, आप funds कहाँ से ले रहे हैं to create the capital redemption reserve, ठीक है. चलिए अब डेट इक्विटी के बारे में बात करते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन और इन द केस ऑफ बायबैक यू हैव बीन टोल्ड कि डेट इक्विटी post buyback should not be less than 2:1, ठीक है, should not be less than 2:1, इससे कम नीचे नहीं जाना चाहिए. So in that particular case sometimes what can happen, they can ask you कि tell us how many number of what is the amount of buyback you can do, कितना आप buyback कर सकते हो, right? So in that case आपको क्या करना है, suppose already आपका debt to equity दिया हुआ है, let me make it easy, 3 lakh and 1 lakh. Suppose this is your debt equity given. Now they are asking me कि आप कितना जो है बायबैक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है. यू हैव बीन आस्क्ड कि हाउ मच ऑफ द बायबैक इज अलाउड टू यू. सो इन दैट पर्टिकुलर केस आई हैव टू फाइंड इट आउट कि कितना यहाँ पे हम कर सकते हैं. बेसिकली -x, ठीक है, यहाँ पे -x हो जाएगा. Do you think that there will be any changes in the debt portion as well because of the buyback? बायबैक की वजह से डेट पोर्शन में भी कोई चेंजेस आएंगे? डू यू थिंक लाइक दैट? डेट में आपकी लाइबिलिटी आती है, राइट? वॉट एवर लाइबिलिटीज यू हैव, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, वो सारी आती हैं. वैसे डेट टू इक्विटी रेशियो के 2 फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, टोटल लाइबिलिटी भी लेते हैं एंड लॉन्ग टर्म डेट भी लेते हैं. इन केस ऑफ बायबैक आई विल सजेस्ट यू टू प्रेफर टोटल लाइबिलिटी फॉर्मूला, ठीक है, टोटल लाइबिलिटी वाला फॉर्मूला. अगर कोई लाइबिलिटी आपकी आ रही है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी, यू हैव टू एड इट ओवर हियर, और आपका जो इक्विटी है उसमें से तो आपका जो है अमाउंट वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. एंड देन यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन टू नो दैट व्हाट इज द अमाउंट विच इज अलाउड टू यू
फॉर दी बायबैक, ठीक है, कितना आप अमाउंट बायबैक कर सकते हैं, बेसिकली आपके इक्विटी पोर्शन में से चला जाएगा. इफ सपोज any debentures you are issuing or anything of that sort you are issuing, that will get added to the debt or debt portion, right? So this is how you have to do. Now, having talked about this, one more thing. चलो इसके बारे में बात करते हैं. So for the purpose of ESOP, I have picked up certain questions, right? Instead of discussing the theory, because it is better to discuss questions, they'll give you more clarity. One thing that I would like to ask you first thing is, what is the difference between the ESOP and this? ये परचेज प्लान्स और ESOP के बीच में क्या फर्क है? What is the difference between this? Yes, नहीं, difference बताना है. See, बहुत बार तो I have already explained this, but ESOP और purchase plans में क्या फर्क होता है? See, एक basic difference मैं बताती हूँ, although both are given to the employees, right? But the difference over here is, in purchase plans, I can purchase the shares on the spot. अभी, for example, employees have been reserved a portion in FPO or IPO. ठीक है, ऑप्शंस देख के क्या समझ में आएगा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रही हूं मैं. एनीवेज, मुझे सुन लो, कोई बात नहीं. स्टॉक परचेज प्लान्स में क्या होता है, एम्प्लॉइज आर गिवन द ऑप्शन टू परचेज द स्टॉक ऑन द स्पॉट. आप अभी परचेज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर द कंपनीज दे ब्रिंग इन देयर public offer, follow on public offer or your initial public offer, in that case they reserve a certain portion for their employees. वो अपने employees के लिए एक certain portion reserve करती हैं कि dear employees, if you want then you can purchase this particular shares, and that is something we call as ESPP or the purchase plans, right? Whereas employee stock option plans क्या होते हैं, यहाँ पे आप purchase तो कर सकते हैं but not right now. You can purchase but in future. आज नहीं, आगे चल के आप परचेज कर सकते हैं on fulfillment of certain conditions. कुछ शर्तें हैं जो कंपनी टू कंपनी डिफर करेंगी, right? Whatever conditions company might want to put up, right? And if you have fulfilled those time based conditions, then you will be allowed to take up these particular shares. And that conditions, yes, vesting period का मतलब क्या होता है, suppose company has put up the condition that after 2 years if you will still be in our employment, right, अगर आप तब भी हमारे एम्प्लॉय रहेंगे, then we will allow you to take up the shares. तब हम आपको शेयर्स लेने के लिए दे देंगे, ठीक है. And obviously these shares are given at discount. ये shares जो है आपको discount पे दिए जाते हैं because yes, you are employees and there will be a certain benefit which will be given to you. Okay, so keeping that in mind, now let us do these particular questions and they will clear you your concepts regarding the question aspect of the ESOP, because I am assuming that you are already well versed with the theory part. ठीक है, तो चलिए. On 1st April, a company has offered 300 shares to each of its 1200 employees. हर employee को 300 shares company ने दिए हैं, right? At 75 per share. Great. The employees are given a month to accept the shares. The shares issued under the plan shall be subject to lock-in to transfer for 3 years from the grant date.
Market price of shares on the grant date is 90 rupees per share. Okay, great. Due to post-vesting restrictions, the fair value of shares issued under the plan is estimated at 84 per share. Up to 30th April, 50% of the employees have accepted the offer and paid 75 rupees per share. The face value of the share is 10. Now, what will be the expense recognized in the year 2019-20? ठीक है, आप अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स दे रहे हैं, कितने पे दे रहे हैं? 75 रुपीज पे. What is the market price of the shares? Is 90 rupees. Great. What is the fair value of the shares? That is 84 rupees. ठीक है, तो पहली बात तो आप मुझे बहुत आसानी से ये बता दीजिए कि कितना पर शेयर, कितना एक्सपेंस हम रिकॉग्नाइज करेंगे. ओके, गुड, ठीक है. सो in this particular case, see, this question gives you market price as well as the fair value. अब देखो कंपनी के लिए एक्सपेंस क्या होगा. अगर मैं 100 रुपए की चीज आपको 90 रुपए में दे रही हूं तो द रिमेनिंग 10 रुपीज इज गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट, राइट? दैट इज द लॉस आई एम बियरिंग इन. वो मेरा नुकसान है. इन दिस पर्टिकुलर केस आई एम गिविंग यू अ शेयर विच इज हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ 90 फॉर जस्ट 75 रुपीज. सिर्फ 75 के लिए दे रही हूँ मैं आपको. बट रिमेंबर, if in a question fair value is given to you, you have to act as per fair value. ठीक है, आपको fair value के हिसाब से काम करना है. अगर आपको question में fair value दी हुई नहीं है, then you have to proceed with the market value. तब आपको market value के हिसाब से काम करना है. But in this question, fair value is given to me. So for a company, what is the expense? That is 84 rupees less 75 rupees. ठीक है, ये हमारा खर्चा हो गया. Next, how many people have accepted the offer? 1200 employees were there, and out of these 50% have accepted the offer. So that means only 600 people have taken the offer, and each person is supposed to get 300 shares. ठीक है, 300 shares. अब ये भी बता देंगे, कोई बात नहीं, आपने पूछा है तो जरूर बताएंगे. सो दिस इज द व्हाट यू कैन से कैलकुलेशन, राइट? सो 84 minus 75, 9 rupees multiplied by 600 multiplied by 300, and the answer is going to be 16,20,000. ग्रेट. अब दूसरा सवाल है कि अलग अलग अकाउंट्स में क्या क्या अमाउंट जाएगा. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू आर इशूइंग द शेयर्स. ठीक है, आप शेयर इशू कर रहे हैं. सो वेट फॉर अ सेकेंड. सबसे पहले तो what will be the amount that will come to me in my बैंक अकाउंट डेबिट. मेरे पास तो 75 रुपीज आ रहे हैं, राइट? दिस इज द अमाउंट विच आई एम गेटिंग. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, sometimes what happens is these transactions go on year. तब एक अलग account भी create किया जाता है, but right now I am trying to keep the things very simple. So there will be an account called as employee compensation expense account. ठीक है, अभी आपने कितना खर्चा रिकॉग्नाइज किया है? 9 रुपीज का, राइट? 9 रुपए का आपने खर्चा रिकॉग्नाइज किया है. दैट इज द डिफरेंस. नाउ टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यू आर गिविंग दी शेयर कैपिटल. यहां पे आपका कितना आएगा? 10 रुपीज विच इज द फेस वैल्यू. शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू ही जाती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका टोटल कितना हुआ? 84 रुपीज इज द फेयर वैल्यू. सो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा? 84 रुपीज. यस, एंड दिस इज व्हाट दे वर आस्किंग कि कॉम्पनसेशन एक्सपेंस में कितना जाएगा. सो दैट्स व्हाट वी सेड कि 9 रुपीज, 600 पीपल मल्टीप्लाइड बाय 300 शेयर्स. सभी अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए. 600 into 300
600 into 300. These are the amounts which will be going into that. Oh sorry, did I write it as 84? ये 84 नहीं होगा. 84 is the phase, the total value, right? आपने इसको 84 पे estimate किया है. This will be 74. 10 rupees तो आपके face value में जाएंगे and the remaining 74 it will be security premium. ठीक है, बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम पे. नहीं वो 74 ही होगा. ठीक है. So this is how now the total of both the sides will be, see 75 plus 9 84. यहाँ का भी टोटल 84 ही आएगा और यहाँ का भी टोटल 84 ही आएगा. Okay, so that is the thing. Now let us see one more question on employee stock option. Next is X Limited has its share capital divided into equity shares of 10 each. Now on 1st January, it granted 20,000 employee stock option at 50 rupees per share when the market price was 120. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने stock option के लिए exercise rate कितना दिया, 50 rupees per share. Market price उस time कितना है, 120 rupees. Okay. The options were to be exercised between 15th March to 31st March. The employees exercised their options for 16,000 shares only. आप देना चाहते थे 20,000 और लोगों ने सिर्फ 16,000 shares ही लिए. So it doesn't matter what you wanted to offer. You only will stick to that what people have taken, right? That is 16,000 shares. Remaining options will lapse. Company closes its books on 31st March. Now which of the following is correct? ठीक है, यहाँ पे क्या चीज correct होगी? I guess this is a very basic, pretty simple question. In this particular question, they have not given you fair value. आपको fair value नहीं दी हुई है. So in such kind of questions, you have to proceed with the market value which is given. ठीक है, market price जो भी आपको दिया हुआ है. Number one thing. Number two, 20,000 you wanted to give, but now it will not play any kind of role क्योंकि people have taken the options just for 16,000 shares. 16,000 shares का ही लोगों ने लिया है. So we will proceed with that only. यहाँ पे आपकी entry कैसे पास होगी? So remember that आपसे कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि आपने बैंक में आपको कितना पैसा मिला, और व्हाट इज द एक्सपेंस दैट यू हैव रिकॉग्नाइज्ड, और व्हाट इज द अमाउंट दैट यू शुड टेक टू द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी आस्क्ड. बैंक अकाउंट में आपका जाएगा 50 rupees which you are taking in, right? Market price is 120, so that means आपका employee compensation expense में कितना जाएगा, 70 rupees, right? इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका कितना जाएगा, 10 rupees, and remaining will go in the security premium account which will be 110 rupees. So total 120, total 120. These will be multiplied with 16,000 क्योंकि 16,000 ऑप्शंस आपने दिए हैं. So this will be the thing. Now, having discussed the employee stock option, see this is how the entry will be passed. 16,000 multiplied by 50. Compensation expense में 70 multiplied by 16,000. Share capital में the face value will go, and securities premium में whatever the difference was, it will go. Now, next thing is the cash flow. Related to cash flow, I would like to ask few questions first, and if you would like to answer, then you can. ठीक है, otherwise I'll answer them myself. Number one thing, suppose if I told you that the opening balance of the retained earnings, opening P&L balance, retained earning मान लो या P&L balance was 50,000, closing balance was 70,000, and the dividend paid
डिविडेंड पेड इज लेट्स से 40,000, ठीक है. So can you tell me that what will be the proposed dividend? That we don't wish for, but still we are going to wish कि concepts आपको आसानी से आ जाएं, ठीक है. बताइए. So can you tell me that what is the अगर सिर्फ आपको इतना ही डेटा दिया हुआ है, if this is the data that has been provided to you, so can you tell me that what will be the proposed dividend? कितना dividend propose किया गया था? Answer. देखो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है. कैसे बन सकते हैं? लेट मी टेल यू. सो देयर आर अ लॉट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस. नंबर 1, इट कुड बी ऑन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में आपको वो दे सकते हैं दैट सी अगेन दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर अस, राइट. ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है. सो इट विल हैव इट्स अकाउंट लाइक दिस. ओपनिंग बैलेंस, अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस आपको लेट्स से 50,000 दिया हुआ है, एंड यू हैव बीन प्रोवाइडेड कि टैक्स पेड इज 80,000. क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, राइट. पेड वाला जो चीज है वो हमेशा यहाँ आएगी, इस तरफ आएगी डेबिट साइड में, बिकॉज दिस इज अ लाइबिलिटी आइटम. इफ इट हैज बीन पेड इट विल बी रिड्यूस्ड, तो ये आपका हमेशा यहाँ आएगा. सो यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट लाइक दिस दैट व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन क्रिएटेड फ्रॉम P&L. मतलब आपने इस साल कितना प्रोविजन टैक्स के लिए बनाया, ठीक है. एंड दिस विल बी 8 + 5 13, 1,30,000, right. If they give me that this is the opening balance of provision for taxation, this is the closing balance, right, and this is the tax paid, P&L में कितना आएगा. Similarly, they can tell you कि this is the provision which we have created for tax 30,000. 30,000 हमने provision create किया है, and you need to tell us that what is the amount of tax which has been paid in the current year. कितना amount of tax pay किया गया है, तो आप इस टेबल से इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है. सेम गोज फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड एज वेल. प्रपोज्ड डिविडेंड इज आर लाइबिलिटी, ठीक है. या तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होंगे कि दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज द डिविडेंड व्हिच वी हैव पेड. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रपोज्ड डिविडेंड आउट ऑफ द P&L, कि P&L में से आपने कितना प्रपोज्ड डिविडेंड निकाला. ऑन अ सिमिलर लाइंस, वन पर्टिकुलर for more account they can ask you to prepare, that is provision for bad and doubtful debts. ये क्या होता है? So we know that we have debtors, right, the people from which we have to collect the amount. ऐसे लोग जिनसे हमें पैसा कलेक्ट करना है, but every year we also know that they might not pay us the full amount, ठीक है. वो हमें पूरा अमाउंट ना पे करें, इसकी भी पूरी की पूरी संभावना है. So that is why what we do is we create a provision. Whenever we create a provision, it is a liability item for us. So इसका opening balance हमेशा इस साइड लिखा जाएगा. So by opening balance of provision, फाइन. मान लीजिए आपका ओपनिंग बैलेंस है 10,000. क्वेश्चन में आपको आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, लेट्स से दिस इज 20,000.
नाउ दे हैव गिवन यू कि इस साल जो है आपके बैड डेट्स हुए हैं 15,000. या and this is see, if somebody has to make questions on the cash flows, देखो directly तो cash flow पे question बन ही सकते हैं which you guys will be able to solve anyways. ठीक है, add और minus ही तो करना है. You just have to remember कि भाई कौन सा item किस में आएगा, right? Whether it is an operating activity item or it is a financing activity item likewise. So if you have read the cash flow, that is the basic knowledge I'm supposing you are having. But these kind of things they impact us. ठीक है, ये सारी चीजें ना थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. So this is why I'm just discussing these kind of adjustments if they will be asked in to you in the examination. ठीक है, तो अगर मैंने आपको कहा कि बैड डेट्स इस साल में 15,000 हैं, तो कैन यू टेल मी, हाँ, if I have given you कि bad debts are 15,000, can you tell me that what is the provision you will create right now? क्या provision create किया होगा आपने bad debts के लिए, बताइए. If the bad debts in this current year is 15,000, bad debts अगर 15,000 है, देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्यों बनाया जाता है, सो दैट यू कैन कंपनसेट द बैड डेट्स, राइट? आप बैड डेट्स को कॉम्पनसेट कर सके. सो दैट मीन्स व्हाट? टू बैड डेट्स, isn't it? I have utilized 15,000 rupees out of this particular provision. 15,000 रुपए मैंने यूटिलाइज कर लिए. So 35 this side total less 10,000 25,000. इसका मतलब मैंने इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बैड डेट्स का प्रोविजन कितना बनाया है? 35 लेस 10 25,000. अब जब इतना बता ही दिया है, सो यू हैव टू टेल मी वन थिंग मोर, दैट हाउ वी आर गोइंग टू एडजस्ट दिस आइटम इन दी कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका कैसा ट्रीटमेंट होगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दिया हुआ होता है ना, सो दिस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम योर डेटर्स. ये आपके डेटर्स में से डिडक्ट होता है, ठीक है. एंड देन देर इज अ लाइन आइटम इन दी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो आपका वहां पे एडजस्टमेंट आएगा इसका, राइट? नाउ ऑन अ सिमिलर लाइंस समटाइम्स दे कैन टेल यू कि परचेज ऑफ मशीनरी वगैरह कितना होगा, राइट? सो दैट ऑल्सो इज वेरी वेरी सिंपल. मतलब कि आपको असेट लाइन आइटम में ना आपको एडजस्टमेंट दे सकते हैं. सो लेट मी टेल यू दैट एज वेल. जैसे कि मान लीजिए here could be any kind of asset, it could be machinery, ठीक है. ये मशीन फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है यार, ये this is not financing activity. Now hear me out. It could be machinery, it could be land and building, it could be furniture and fixture, it could be any kind of asset. किसी भी तरीके की asset हो सकती है. But we have to be prepared, right? सेम कैश फ्लो पढ़ा के और फिर टाइम वेस्ट करने का मेरा तो इरादा नहीं है. So why not to discuss something new? Debit, credit. Okay. So this is for the assets. Assets से related यहाँ पे आपका इन मशीनरी आ सकता है, फर्नीचर फिक्चर्स आ सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, राइट? नाउ बिकॉज दिस इज एन असेट अकाउंट, इट विल ऑलवेज हैव अ ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, डेबिट साइड बैलेंस. इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा कैसा होगा? डेबिट साइड में. सो साल की शुरुआत में आई हैड मशीनरी वर्थ 10 लाख रुपीज. 10 लाख रुपए की मेरे पास में मशीनरी थी. नाउ क्लोजिंग कितना हुआ मेरे पास में? लेट्स सपोज आई हैड द क्लोजिंग ऑफ 12 लाख रुपीज. इन द ईयर एंड आई हैड balance of closing machinery at 12 lakh rupees. Now
क्वेश्चन में मुझे दिया हो सकता है डेप्रीसिएशन, फाइन, सो दे हैव गिवन मी डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन इस साइड आएगा बिकॉज इट लीड्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी। सो डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना आया, मान लीजिए 2 लाख रुपीज। सो व्हाट डज इट मीन, इससे मुझे क्या पता चल रहा है? नाउ दैट इज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू यू इन क्वेश्चन। तो अभी मुझे इससे क्या पता चल रहा है? टेल मी। This tells me that this year I have purchased the machinery. ठीक है, दोनों साइड का बैलेंस सेम होना चाहिए। अगर वहां 14 lakhs है तो यहाँ पे भी 14 lakhs होना चाहिए, राइट? एंड दिस मीन्स दैट दिस ईयर आई हैव परचेज द मशीनरी। यहाँ पे आपका आएगा बैलेंसिंग फिगर टू बैंक अकाउंट एंड इट विल बी व्हाट, 4 लाख रुपीज। एंड दिस शोज दैट आई हैव परचेज मशीनरी दिस ईयर। ठीक है, टोटल यहाँ का भी 14 lakhs और यहाँ का भी टोटल 14 lakhs। इज दैट क्लियर? दोनों साइड का टोटल। नाउ सपोज अगर यहाँ पे बैलेंस कितना होता, मान लीजिए बैलेंस होता 7 lakhs, सिर्फ 7 लाख का बैलेंस होता, so that means 10 lakhs over here, 9 lakhs over there, it means I have sold the machinery। मैंने मशीनरी क्या की है, बेची है। so by bank account 1 lakh rupees। ठीक है, 1 लाख रुपीज। एंड दिस इज हाउ आई गॉट टू नो कि मेरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आई विल शो सेल ऑफ मशीनरी 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए में। कई बार ये भी हो सकता है दैट इन क्वेश्चन दे माइट गिव यू कि दिस मशीनरी, देयर वाज अ मशीनरी हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज हैज बीन सोल्ड फॉर 50,000 रुपीज एंड देयर इज अ लॉस ऑफ 50,000। ठीक है, पर 1 लाख रुपए की बुक वैल्यू थी मशीन की। हियर मी आउट वेरी केयरफुली, 1 lakh rupee was the book value of machinery and it has been sold for 50,000। 50,000 is the loss that you have faced। तो अब मैं उसको कैसे दिखाऊंगी? सिमिलर क्वेश्चन में देखिए, बुक वैल्यू मशीन की कितनी थी, 1 लाख रुपए, लेकिन मैंने उसको बेचा कितने में? सो बैंक अकाउंट दैट इज माय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना आएगा, 50,000, right? And I have incurred a loss of 50,000, and this is how book value is 1 lakh and the total of both the sides is 10 lakhs। ठीक है, सो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना जाएगा, 50,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा बिकॉज दैट यू हैव सोल्ड द मशीनरी। और जो बाकी का 50,000 है वो आपका P&L अकाउंट में जाएगा। फाइन, नाउ इफ आई just wait, I'll change the values over here। 60,000 की मशीनरी बेची थी और 40,000 रुपए का नुकसान हुआ है। So this 40,000, is this a investing activity or an operating activity? क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? Tell me, is this an investing activity or operating activity? See, facing loss or profit on sale of machinery is not an operating activity for us। ठीक है, it is not an operating activity for us, it is an investing activity। so ये जो 40,000 का आपको नुकसान हुआ है ना, you will remove this from your operating activities। आप इसको हटाएंगे। if this has already been deducted because it is a loss, you have to add it back। अगर ये ऑलरेडी डिडक्ट किया जा चुका है तो आप इसको एड बैक करेंगे बिकॉज दिस इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या दिखाएंगे? इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट वी ओनली शो द कैश आइटम। सो फॉर मी कैश आइटम इज 60,000। जो वैल्यू पे मैंने मशीनरी बेची है, ठीक है, जो वैल्यू पे मैंने मशीनरी बेची है दैट इज 60,000।
and 60,000 will be shown as a cash inflow in your cash flow statement account. ठीक है, that is one thing. Now ये जो भी मैंने तीन तरीके आपको बताए, तीन वेरिएशंस करके बताए, the same kind of thing will be applicable if it is a building account, if it is a furniture and fixture account, right? सब पे आपका सेम चीज ही applicable होगा. But remember, if it is an investment account, on investments we do not face depreciation. Remember that investments पे हम depreciation face नहीं करते हैं. So investments में if there is any change, either there will be a purchase or there will be a sale. ठीक है, क्योंकि depreciation का तो कोई रोल होता ही नहीं है. Now next thing, if I tell you that this is the year 2023 and this is the year 2024. Equity share capital 10 lakhs. Can you tell me that what will be the cash flow from financing activity? Can you tell me that what will be the cash flow from financing activity? Is it an inflow or outflow? इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, बताइए. नो आंसर्स. See, this clearly tells you equity share capital का balance 10 लाख था, 12 लाख हो गया है. What does it mean? There is an issue of share. ठीक है, issue हुआ है share, plus reserve and surplus is also increasing. This means you have issued the shares on premium. ठीक है, जब कुछ और दिया नहीं गया है, so I will assume that if there is increase in the reserve and surplus, this is because of premium. किसकी वजह से हुआ है? प्रीमियम की वजह से. So over here we have 2 lakh rupees increase. Over here we have 50,000 increase. So 2.5 lakh will go in the issue of share capital. ठीक है, it is a financing activity. Money has came up to you. ठीक है, so this is an inflow 2.5 lakhs. ठीक है, 2.5 लाख का आपका inflow हुआ है. Next thing, similar kind of question में वो आपको दे सकते हैं. इसका क्या ट्रीटमेंट होगा जरा बताइए. If this information is given to you, what will be the treatment of this? Goodwill, GW मतलब goodwill. ठीक है. See, value of goodwill has reduced. It means what? I have written off the goodwill. मैंने goodwill write off की है. कहाँ से write off की होगी? I must have shown this as an expense in my P&L account. मैंने अपने P&L account में as an expense show किया होगा. This means मैंने profit and loss की value कम की होगी. If earlier my profit was 10 lakh rupees, I might have subtracted, ये मेरा profit था, और इस प्रॉफिट में से मैंने गुडविल राइट ऑफ की 50,000 की, एंड नाउ माय प्रॉफिट इज 9,50,000. सो नाउ आई वांट टू नो दैट व्हाट वाज द कैश प्रॉफिट विद मी. ठीक है, मेरे साथ कैश प्रॉफिट क्या था, एंड ऑब्वियसली दिस इज अ नॉन कैश एक्टिविटी. राइटिंग ऑफ गुडविल, इट इज अ नॉन कैश एक्टिविटी. फाइन. तो मुझे क्या करना है? इफ आई वांट टू नो माय कैश प्रॉफिट, अगर मैं अपना कैश प्रॉफिट जानना चाहती हूँ, तो मैं इस 950 में एड बैक कर दूंगी 50,000. गुडविल रिटर्न ऑफ को मैं एड बैक कर दूंगी, दिस विल बी 10 lakhs.
तो ये ट्रीटमेंट कब होता है? ये ट्रीटमेंट होता है हमारे नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. This happens in my P&L account that I show goodwill written off as an expense, and this happens in my cash flow statement where non-cash items needs to be added back to the profit. ठीक है, ये P&L में होता है और ये कैश फ्लो में होता है. फाइन, दिस इज समथिंग. अगर मैं आपको कहूं कि डिबेंचर्स जो हैं वो कम हो गए हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो प्रपोज डिविडेंड का आई हैव शोन यू द टेबल दैट हाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट, एंड रिमेंबर दैट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑलवेज डिविडेंड पेड विल बी कंसीडर्ड, बिकॉज हम सारे कैश आइटम कंसीडर करते हैं. Proposed dividend is not dividend paid in cash. That is the amount you have taken out of the P&L account. वो तो वो amount है जो आपने P&L account में से बाहर लिया है. That is not the dividend paid. So remember that whenever you are calculating the financing activity, always consider your this डिविडेंड पेड. अगर आपको डिबेंचर्स की वैल्यू ऐसे दिखाई जा रही है, बीट डिबेंचर्स बीट प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आपको ऐसा कहा है कि 2023 में 50,000 के थे और अभी 2024 में नील हैं, सो दिस मीन्स व्हाट, यू हैव रिडीम्ड डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया है. फाइन, एंड दिस विल बी शोन एज एन आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. पैसा आपके पास से बाहर गया है, राइट? मनी हैज गॉन आउट ऑफ योर पॉकेट. 50,000 से अब बिल्कुल भी नहीं है. सो दिस इज व्हाट द ट्रीटमेंट इज. नाउ आई एम होपिंग कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा स्टेटमेंट आपको पता है, राइट? एंड दिस फ्रॉम माय साइड आई हैव ट्राइड टू गिव यू सर्टेन एडजस्टमेंट्स. तो दिस आई एम होपिंग दैट दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. Now, one more thing that I would like to discuss in the right shares is this question. This is value of right. Right shares we give to our existing shareholders, right, at a reduced price. Remember that, not at discounted price. नहीं, discounted नहीं होता है. So suppose if the face value of share is 10, market value of the share is 50, and I am giving the share to my existing shareholders at 30. So this is what, at a reduced market price. ये मेरी market price है. This is my face value. If I give shares at 9 rupees, then that will be called as discounted. उसको हम discount बोलते हैं. यहाँ मैं इसको discount नहीं बोलूंगी. I am giving at a reduced price. ठीक है, reduced price पे दे रही हूँ, that is 30. Now let us see this. So a company has decided to increase existing share capital by making rights issue to existing shareholders for every one new share for every 2 shares held. 2 शेयर्स जो आपके पास थे उसके लिए 1 शेयर आपको दिया जा रहा है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट. आपको वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करना है. अगर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट वाज 576, the company has decided to give 1 share of 100 each at a premium of 188 each. ठीक है, तो अब देखो आपको क्या पता करना है. वैल्यू ऑफ राइट क्या होगा, पहले क्या वैल्यू थी और बाद में क्या वैल्यू है शेयर्स की. What was the value before and what is the value after right shares? तो right shares से पहले, इशू करने से पहले 576 थी मार्केट वैल्यू. आफ्टर दैट इज एक्स राइट प्राइस. क्या होगा, हम 2 शेयर एग्जिस्टिंग शेयर्स जिनके पास हैं उनको हम 1 शेयर दे रहे हैं at 288 divided by 3. This is the come right, this is the x right, right? This particular price is inclusive of right option. ठीक है, यहाँ पे आपके पास chances थे right option के. So that is why value is inflated. Less 480 is equals to 96. This is the value of right. Value of right मतलब शेयर की वैल्यू राइट शेयर देने से पहले क्या थी, शेयर की वैल्यू राइट शेयर्स देने के बाद क्या होगी. This is going to give you your value of right. So this is something that I wanted to discuss today, and I hope that you might have found the session useful. If you did, then please do not forget to like this video. Thank you so much for joining in, and good night everyone.